What's up? Hi guys, this is Abhishek Sawan aka BrowWizIndia, and this is our day one for the combination brows. I'm super excited. Students are already there, they are already into it, and let's go. So we already done with the brow mapping sessions, and we have talked a lot of about the theory part, what are skin types, and what medical conditions to be there, how we can work with them, how many techniques are there, microblading, ombre powder brows, combination brows. We have talked everything about that, and now this is gonna be a practical session. So I'm just waiting for them to complete their work on the paper, and stay tuned. Let's go. So we are done for day one. 3 students है अभी के लिए, and then I guess it is going very well because ज़्यादा हम लोग time spend कर सकते हैं हर एक students के लिए. We had a proper time for doing a brow mapping and everything, so they are all set for that. The brain is working with that कि कैसे eyebrow shape हो सकता है, किस तरह से कर सकते हैं वगैरह. I'm excited for the day 2 because we'll be talking about the microblading and everything tomorrow. So yeah, see you tomorrow. Let's go. What's up guys? Good morning. This is our day 2. हम आज बहुत कुछ बात करने वाले हैं. We're gonna meet other artists also, and we're gonna talk about them, how they have started and everything, and also we're going to practice on machine and the microblading. So it's gonna be a practical day today. Super excited. Let's start. ये पेंडुलम होता है, ये ऐसे चलता है, नीडल भी ऐसे ही चलता है. Cool guys, so we are doing a microblading and they all are working on their sheet. So it's very important to understand the flow when we are doing a microblading, and latex skin जो हम practice करते हैं उसमें थोड़ा वो easy हो जाता है because when they are working on the real skin, real client, it get very easy for them to do it, you know. तो हमारा जो flow है microblading का, किस तरह से करने वाले, क्या flow होना चाहिए, कैसे pressure होना चाहिए, वो सारा अभी यहाँ पे. कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स है ना, फर्स्ट टाइम करते हैं तभी बहुत ज़्यादा कम प्रेशर से काम करते हैं, या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर से काम करते हैं, तो उनको बैलेंस आउट करने के लिए हमें इजी हो जाता है. तो इट गेट वेरी इजी फॉर अस टू टेल देम एंड गाइड देम कि कैसे करना है आगे. वी आर डन फॉर अ डे. हम लोग ने प्रॉपरली प्रैक्टिस किया है माइक्रोब्लेडिंग के लिए, ओम्ब्रे पाउडर के लिए, मशीन नॉलेज, वी गॉन थ्रू द नीडल्स कि कौन से यूज़ किए जाते हैं, किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एंड व्हाट टाइप ऑफ नीडल, व्हाट टाइप ऑफ नीडल लेंथ इट शुड बी. मशीन के अंदर स्ट्रोक लेंथ भी होता है, तो वो उससे क्या डिफ्रेंशिएट होता है एंड काम में कैसे फ़र्क पड़ता है, उसके बारे में बहुत कुछ बातें की है. And it was a fun session for me, and I'm looking forward for day 3. We are starting our model. We'll be doing a combination on our model, and students are already here, model here. I'm already done with the setup. So this is my machine. So this is already wrapped, so because we'll be using it on our client, so I don't want to have any contamination with that. We have a blade because we'll be doing a combination. There's a needle, golden razor scale, pencil, and other small stuff for the cleaning. I do have a pigment, so that we'll be checking her skin type, skin tone. According to her, we'll be choosing the right colors. So I'm super excited. Let's go with the next part. Yeah, let's go. How much passes we can go like in one go? Like for the microblading we can go 2 passes. Yeah. For the shading we can go 3 to 4 passes. Okay. Depend करता है कि कैसे pigmentation ले रहा है. Because sometimes dry skin people will take a lot of pigment easily. Oily skin will take more time to settle down. Yeah. So if it is oily skin and if it is not taking a pigment with the 1 RL, then I'll switch on to the 3 RL. Okay. Because there will be a lot of resistance, and then I need to go shading ज़्यादा हो जाएगा उससे. Okay. Yeah.
So I hope you have seen the earlier videos जो जहाँ पे मैं demo दे रहा था combination brows के लिए, and we are done with that. Then after lunch we started with the color theory. There are a lot of factors counts no कि colors कैसे choose कर रहे हैं, किस तरह से काम करते हैं, and right now we have already gone with that, and they are thinking about the color mixing and everything कि कैसे करें, किस तरह से करें, and it's so fun because the brain is started working in their direction कि हर एक क्लाइंट के हिसाब से वो चूज़ कर सकते हैं राइट कलर एंड एवरीथिंग यू नो. सो इट्स इज़ वेरी फन एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर देम टू वर्क ऑल्सो एंड देन गिव मी द रिजल्ट्स बिकॉज जिस तरह से हम लोग पिगमेंट यूज़ करते हैं उस तरह से हमारा जो रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं वाह. सो आई एम हैप्पी फॉर दैट. ओके कूल. आई गॉट अ कॉल. आई नीड टू गो बैक. सी यू. What's up guys? Okay, ये यहाँ पर रख दो. Okay. Hi guys, welcome to our day 4. We are starting with our live model day and students already started working. We are also working here, so it's a super busy day. It's gonna be. So we are just doing a setup for a model and we are preparing our setup for that. And yeah, it's gonna be a busy, super fun day. Yeah, let's go. What type of pigment? Dark custom. Yeah. What about the skin type? Oily. So Okay. we need blackish More. No, we need more warmer color. warmer color. Right. So darkest one is the warmest. Yeah. Okay. Do you do makeup every day? Do you want very dark brows? Very natural, right? Natural चाहिए तो we can go. We should not use any blackish brown then. Okay. Let's go with the espresso. Espresso and Okay. darkest brown. Espresso and darkest brown, but darkest one will be more because according to Fitzpatrick scale points, darkest one is coming. Also, she has a oily skin, so we need more warmer color. Okay. So it's 8-2 or 6-4? 6-4. Oh. 6 is darkest brown, 4 is espresso. We are doing, you're dragging it. Okay. हमें क्या करना है? Stable रखो और use your fingers. ये जो नीचे वाले fingers है उससे आप push करोगे. Right? Yes. तो ये good. This is going good. We worked on the Ombré powder brows yesterday. And we are working on combination brows. What's up guys? This is our day 5. It's gonna be our live model day today again. So they are already started with their work and everything. This is their second model for the mapping and they are already doing good. I haven't helped them for their mapping, so I'm happy for that because what we have taught on the day 1, day 2 practiced it, and then day 3 they have worked on the live model, which is super fun, super good transition in that way. So yeah, I guess I can show you some of the videos what they are already working. What's up guys? So we are done with our 5 days training and this was the last day as you have seen. For me it was a good experience because this batch was very smooth in a way because all the artists, literally the students they were working was really good while working. They had a different backgrounds, like you know, some of them are makeup artists, some of them the nail artists, and then they had a good background and then they are very interested learning this also. So for us it got very easy because जो मैं बोल रहा था, जो मैं बता रहा था वो as it is वो कर रहे थे and it went very smooth and I felt they were very passionate about the things they learned from Victress. So I'm hoping for and voting them for the best thing to do because I want to see them working nicely in the market because there are a lot of good artists there, but there are a lot of bad artists also. So I want them to be as a good artist in the market and produce good work, quality work in that way. And for me it was a very good experience in
इन माई बैच, बिकॉज हर एक बैच में मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद ग्रो कर रहा हूँ, बिकॉज जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जब भी मैं इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर देता हूँ या फिर मैंने जो एक्सपीरियंस लिया हुआ मैं बोलता हूँ, तो जब भी मुझे भी सामने वाले से वो अप्रोच मिलता है या फिर उनसे भी वही सेम रिएक्शंस मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि आई एम डूइंग समथिंग गुड अबाउट इट, एंड दैट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग मी, बिकॉज मुझे ट्रेनिंग में बहुत मज़ा आता है इन दैट वे, बिकॉज आई लाइक टू ट्रेन पीपल, बिकॉज मैंने भी ऐसे ही सीखा है, खुद से ग्रो किया है इन दैट वे, एंड जो मुझे हेल्प मिली है रमन का, निखिल सर का, एंड अदर पीपल ऑल्सो अराउंड आवर टीम विक्ट्रेस, दे बीन वेरी गुड एंड काइंड टू मी विद माई my behaviors and my things and everything. So it was a really good experience for me in the batch also. It gets always, I get very passionate when it's come to the teaching, And ये batch में I have one more person. She's our newly educator in a way, and she's our permanent artist at Victress, and that's our Dimple. That's our Dimple, and then you must be seeing her on the videos and a lot of comedy stuff that she does in the studio. She been really good help for this batch, and I just wanna ask her how was her experience and everything. So Dimple, this is your second batch or first batch? This was my second. Second batch, yeah. Second batch था, but I guess she was very into in this batch. So मुझे सिर्फ जानना है कि how was her experience? Okay, hello. So first of all, experience was amazing. जैसे कि फ़र्स्ट बैच में मैंने आपको असिस्ट किया था, तो जैसे आपने बताया ना कि ग्रो कर रहे हैं हम लोग, तो वैसे मैं भी फील कर रही हूँ कि हर बारी कुछ नई जो चीज़ पता है ना उससे भी हम ज़्यादा ही कुछ सीख रहे हैं. पता है बट एक छोटी जो चीज़ होती है. हाँ जी. हमें पता है, हम करते आ रहे हैं, बट उसके अंदर यस राइट, उसकी वजह से वो जो कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो रहा है बहुत ही. और जनरली भी किसी को कुछ सिखाना या कुछ बताना पसंद है. लाइक मेरे पास जो नॉलेज है ना वो मुझे देना अच्छा लगता है. एंड आई वॉन्ट कि कभी कभी कोई आर्टिस्ट शायद छोटी छोटी चीज़ में कहीं अटकता रहेगा, जो मैं अटक रही थी जब मैं मेरे पीरियड में थी, लाइक स्ट्रगल पीरियड में. तो मुझे वो चीज़ें उन्हें बताना बहुत अच्छी लगती है, और वो फॉलो करते हैं, और वो जब सक्सेस होते हैं ना, तो आई वॉज लाइक वाओ. मतलब मुझे अच्छा लग रहा है जो मेरे पास है वो शेयर करना. So it was really great experience for me also. Perfect. Thank you so much. Thank you. So guys, that's Dimple for you, and एक बार आपका Instagram भी बता देना. Oh, so my she has an Instagram also, so do follow her. She's doing really good work for the brows and lips, and now she's getting into the training also. So yes, definitely it's gonna be a fun time with her. So my Insta ID is BrowBlush by Dimple. जो अभिषेक थोड़ा बोलने में अटकते हैं. ऐसे बोल रहे कि हाय गाइस, दिस इज अभिषेक सावंत aka BrowWizIndia, and we have a brow blush Dimple. सी वो पॉज यही चीज़ है. तो ब्राउ ब्लश बाय डिम्पल, ये ऐसे टंग ट्विस्टर डाला है इन्होंने. तो जिसको बोलने आए तो वो उनको जिसको ये ठीक से बोलना है 10 बार, उनको वो फ्री सर्विस देंगे आईब्रो का. तो एंड टुडे वी हैव खुशबू आल्सो इन माय बैच. शी हैज गिवन अ लेक्चर ऑन माइक्रोब्लेडिंग आल्सो टुडे. सो गाइस, वी हैव खुशबू भीमानी. How are you doing? What's up? I'm doing good. Okay, so अभी उन्होंने अभी माइक्रोब्लेडिंग के ऊपर एक सेशन लिया था, and it was pretty good, and then she gave a demo also on that. So for me it was, oh wow, she's doing really good. Yeah. Doing my tarif. That's No, it was so good. Let's just talk about you. How do you started? 2 साल का क्या फंडा है? not gonna say that. Okay, over to you, Khushbu. Okay, hi. So this is Khushbu Bhimani. My Instagram handle is Khushbu_Bhimani. Please go and follow first. So that's Khushbu aka Khushbu. Yes. So yes, I'm from a finance background. मेरे लिए फील्ड बहुत नया था. I was planning for a makeup, but this was something new. So I was like, we can lead this company, this industry. बिकॉज वो टाइम पे काफ़ी नया था जब भी मैंने स्टार्ट किया 2019 वी स्टार्टेड. यस. सो अभिषेक तभी भी मुझे ट्रेन कर रहे थे अंडर रमन, सो दैट वाज अ गुड थिंग. I was getting trained for the doing your batches and everything, so I was assisting Raman. So ये कैसे मतलब ऐसे properly lineage चल रहा है हमारा? डेफिनेटली ये चल रहा है. सो या मैं थोड़ा डर रही थी. आई वॉज स्कैर्ड, स्केप्टिकल, बट येस आफ्टर प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन डेफिनेटली यू कैन डू इट. दिस इज अ न्यू फील्ड, दिस इज अ न्यू इंडस्ट्री राइट नाउ.
नाउ जो इंडिया में काफ़ी अच्छे से चल रहा है, पहले नहीं था, पर अभी मुझे लग रहा है काफ़ी इवॉल्व हो रहा है, लोगों को इस बारे में पता है, अवेयरनेस आ चुकी है. सो डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू गो फॉर दिस इंडस्ट्री, दिस इज़ द टाइम. You should start. And कुछ भी हो जाता है. If I can come from finance background, anybody can do anything. Yeah. So go for it. एंड खुशबू नहीं, सॉरी, कौस्तुभ जो हमारा कैमरा पर्सन है, उनके हाथ दुख रहे हैं अभी पकड़ के. खुशबू बहुत ज़्यादा बोल रही है. नहीं, बट अभी मैं और कुछ बोलने वाला हूँ, ठीक है, तो आपको वैसे ही रहना है कौस्तुभ. तो व्हाट डू यू लाइक, ब्राउज और लिप्स? Both. मुझे लगा लिप्स बोलने वाले हैं. ओके, कुछ तो एक तो होगा ना यार. I like brows more because वो थोड़ा face पे directly change दिखता है and client are super happy. Lips take time to result for it to 60 I was about to ask also कि why, but उन्होंने पहले ही बोल दिया. That's खुशबू for you guys. So if you are not following her, do check out her page. She is creating a lot of good content for the regulated PMU and everything. Yes. आप दोनों इंडस्ट्री साथ में हैंडल कर सकते हो, जो मैं अभी कर रही हूँ. तो अगर आप फील्ड चेंज करना चाहते हो, सो दिस इज़ द बेस्ट. मतलब आप पार्ट टाइम ये भी कर सकते हो, पार्ट टाइम जो कर रहे हो वो भी कर सकते हो. सो यू कैन गो फॉर दिस इंडस्ट्री. For sure. See, there is no stopping. अगर आपको सच में काम करना है और सच में आपका पैशन है, तो so don't worry about it. Just get into it. Come to Victress because we are the best. Yeah. Definitely we are. We are the best, man. Let's go. Thank you so much, guys. Victress Beauty Academy Lounge, and we are with the Victress Beauty Academy in India and Canada. So if you wanna get professional trained by us, tell us. Let's go. These are the new Victress students. Thank you so much, guys, for watching my videos. And if you are still here and watching me, then definitely go check out my other videos also, other vlogs also for the batches and everything. Like, share, Subscribe. follow, subscribe to my channel. BrowWizIndia. Let's go. And we are with Victress Beauty Academy. One and eyebrow.